Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. This is a class 6 general science presentation by Miss Noreen Bibi. Our today's topic is how do plants take in water? In this lesson we will discuss how plants take in water from the soil. प्लांट्स के अंदर वाटर सॉइल के अंदर से कैसे आता है यह हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. This topic is from chapter number 4, Plants and Photosynthesis. Learning objectives. By the end of this lesson, students will be able to define osmosis and to describe plants' water intake by osmosis. Contents. This topic includes osmosis, water intake by root hair cells, movement of water to the inner root cells, transportation of water to the whole plant, and finally there will be an assignment. Recapitulation. Recapitulation is the recap or revision of the previous knowledge. Previously we have discussed about plants need water. प्लांट्स नीड वाटर. आइए थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं कि जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था. प्लांट्स नीड वाटर बिकॉज दे आर लिविंग थिंग्स. एज वाटर इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ and one of the raw materials for photosynthesis. We know that plants carry out photosynthesis for making their food. So, for carrying out photosynthesis, they need water because water is one of the raw materials. That's why they need water. And without water, no life is possible. So, being a living thing, plants need water. Plants need water due to two reasons. First, being a living thing, they need water. And the second one, for carrying out a vital process of photosynthesis, they need water. If plants need water, how do they absorb or take in water? अगर प्लांट्स को ज़रूरत है ही तो कैसे उसको लेते हैं, ये भी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था. दैट वाटर एंटर्स अ प्लांट थ्रू इट्स रूट्स. रूट्स वो पार्ट होती हैं जिससे वाटर प्लांट के अंदर एंटर होता है. And there are the two functions of roots. They hold the plants in the ground and take in water and minerals from the soil. There are thousands of tiny root hairs on the roots. These root hairs give a big surface area to absorb more water and minerals from the soil. इन root hairs की वजह से roots की absorbing surface increase हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर और मिनरल्स सॉइल में से एब्जॉर्ब होते रहते हैं. लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, हाउ प्लांट्स टेक इन वाटर. आइए अब आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें था कि प्लांट्स के अंदर वाटर कैसे एंटर होता है. हाउ प्लांट्स टेक इन वाटर. वाटर एंटर्स द प्लांट थ्रू इट्स रूट्स. ये हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है.
उसका प्रोसीजर क्या है, लेट अस हैव अ डिटेल्ड स्टेप वाइज डिस्कशन ऑफ द प्रोसेस। उस प्रोसीजर को, उस प्रोसेस को डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं, वन बाय वन हम देखते हैं कि वाटर पहले कहाँ मूव करता है, फिर कैसे एंटर होता है, फिर अंदर की तरफ कैसे जाता है, अपवर्ड कैसे मूवमेंट होती है उसकी। ये जो फिगर आपके सामने है, इसमें आपके सामने ये शो किया गया है कि हमारे पास जो रूट्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर वाटर भी होता है, एयर भी होती है। प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया था कि वाटर और मिनरल्स को रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करते हैं, और इसी तरह एयर के अंदर से ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब करते हैं ताकि रेस्पिरेशन भी हो सके। सो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इसी सॉइल पार्टिकल के अंदर से रूट हेयर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब एब्जॉर्ब होते कैसे हैं, इसको हम अभी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। Osmosis and absorption of water. What is the link between the process of osmosis and absorption of water? Root hair cells take in water by a diffusion process called osmosis. Water enters the root hair cells by osmosis. And what is osmosis? What happens during osmosis? During osmosis, water moves from a region of high water concentration to a region of low water concentration. Osmosis में वाटर की मूवमेंट होती है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में। हाई कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोर वाटर मॉलिक्यूल्स एंड लो कॉन्सेंट्रेशन मीन्स लेस वाटर मॉलिक्यूल्स। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, इस डायग्राम में आपको मॉलिक्यूल्स नज़र आएंगे, one which are blue in color and the other one which are yellow in color. Ignore the yellow ones but focus on the blue. ये जो blue molecules हैं ये represent करते हैं water molecules को। There is a partition between the left hand side and the right hand side of the picture. ये जो partition है, this is permeable. It allows, it permits the molecules to move across it, but this is semi-permeable. Semi-permeable means it is giving permission but selective permission, क्योंकि कुछ molecules को ये allow करती है और कुछ को नहीं करती, that's why ये semi-permeable membrane है। So water molecules will move from a region of high water concentration to a region of low water concentration. अगर आप गौर करें तो आपको जो लेफ़्ट हैंड साइड है वहाँ पे नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स वो ज़्यादा नज़र आएंगे। इसका मतलब दिस इज़ द हाई वाटर कंसंट्रेशन रीजन, while the right hand side of the picture have less number of molecules, that's why it is low water concentration. Now the water molecules will move from a region of high water concentration to a region of low water concentration. This is called diffusion, and if the diffusion takes place through a semi-permeable membrane, it is called osmosis. Osmosis में असल में मूवमेंट किस चीज़ की होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स की होती है, और किस रीजन से किस रीजन में होती है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। Firstly, we will see how water enters into the root hair cells. This is the enlarged picture for root hair cells. Water enters the root hair cells because the concentration outside is higher than the inside. अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो आपको वाटर मॉलिक्यूल्स नज़र आएंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर आउटसाइड द रूट हेयर सेल हाई है, इसका मतलब है दिस इज़ द हाई वाटर कंसंट्रेशन रीजन, वाइल इनसाइड द रूट हेयर सेल्स उनकी कंसंट्रेशन कम है, दैट्स वाई दैट इज़ द लो वाटर कंसंट्रेशन रीजन। सो हमारे पास दो रीजन्स बन जाते हैं, वन विच इज़ हाई वाटर कंसंट्रेशन रीजन और दूसरा है रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन।
हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन रीजन कौन सा है? आउटसाइड द रूट हेयर सेल। और लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन रीजन कौन सा है? इनसाइड द रूट हेयर सेल। नाउ ऑस्मोसिस में डिफ्यूजन टेक प्लेस करता है, बट किस रीजन से किस रीजन में? हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन रीजन में। तो हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन है आउटसाइड और लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है इनसाइड। दैट्स व्हाई वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द रूट हेयर सेल्स। इन दिस वे वाटर एंटर्स अ रूट हेयर सेल। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, इसको ब्लू कलर के एरोज के साथ आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है कि वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड से इनसाइड मूव किए जा रही हैं। किस वजह से? बिकॉज इट्स कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड इज हायर while inside is lower. Next is water to inner root cells. अब वाटर मूव करेगा रूट हेयर सेल से इनर रूट सेल्स में। वाई एंड हाउ, कैसे, इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। एज मोर एंड मोर वाटर एंटर्स द रूट हेयर सेल्स, जाहिर सी बात है, डिफ्यूजन होता रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन अगर बाहर ज़्यादा है तो वाटर मॉलिक्यूल्स कॉन्टीन्यूसली एंटर होते रहेंगे रूट हेयर सेल्स के अंदर। नाउ द रूट हेयर सेल्स हैव मोर वाटर देन द सेल्स नेक्स्ट टू दैम। रूट हेयर सेल्स के अंदर अब वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, आउटसाइड की निस्बत नहीं, बल्कि द सेल्स विच आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू दैम, यानी रूट हेयर सेल्स के साथ इन अंदर की तरफ जो सेल्स जुड़े होते हैं उनके अंदर अब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन रूट हेयर सेल्स की निस्बत कम होती है। अब रूट हेयर सेल्स के पास हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन है और उनसे अगले वाले सेल्स में लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है। नाउ द वाटर विल मूव बाय द ऑस्मोसिस अक्रॉस इनटू द सेल्स फर्दर इनसाइड द रूट, यानी अब अंदर की तरफ जितने भी सेल्स होंगे उनमें भी यही प्रोसीजर फॉलो होगा कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। जिस सेल में भी वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी उससे अगले वाले में वाटर मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद ऑस्मोसिस के थ्रू क्रॉस होते चले जाएंगे। इसलिए वाटर इनसाइड द रूट सेल्स यूं ही अंदर की तरफ मूव करता रहेगा। वी नो दैट रूट हेयर सेल्स absorb water, take in water by the process of osmosis. When the root hair cells have more concentration of water than the cells next to them, then the water molecules from the root hair cells will move to the inner cells. In this way, water will move from cell to cell by the process of osmosis. Understand? Next is water in xylem and to whole plant. We know that xylem tubes carry water to the leaves for photosynthesis. How do water reaches the xylem tubes? With the water continuously entering the root hair cells passes to the next cells by osmosis further inside the root and is carried by the xylem tubes to the rest of the plant. अब ये आपके सामने एक प्रेजेंटेशन है अबाउट द वाटर मॉलिक्यूल्स. वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल. वाटर फर्स्ट एंटर्स द रूट हेयर्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. सबसे पहले वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू रूट हेयर सेल्स में एब्सॉर्ब होता है. इट मूव्स टू द इनर सेल्स. द वाटर passes across the root from cell to cell by osmosis. अब ये जो रेड एरोज हैं ये पाथवे रिप्रेजेंट करते हैं. एक सेल से दूसरे सेल में वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है. देन जब सेल्स के साथ अंदर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर जाते हैं तो यही वाटर मॉलिक्यूल्स फिर जाइलम ट्यूब में पहुंचते हैं, जो कि जाइलम ट्यूब है रूट की. ये कनेक्टेड होती है टू द जाइलम ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस एंड लीव्स एट्सेट्रा. यानी यही वाली जाइलम ट्यूब्स थ्रू आउट द प्लांट्स प्रेजेंट होती हैं और वाटर को ट्रांसपोर्ट करती हैं इनटू द होल प्लांट. वाटर रूट हेयर सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, देन इनर सेल्स के अंदर मूव करता हुआ पाथवे को फॉलो करता हुआ जाइलम ट्यूब्स में एंटर होता है और वो जाइलम ट्यूब्स उस वाटर को कैरी करती हैं टू द ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स.
Visual demonstration of the process. Let us understand the process of water intake by plants by using a video clip. ये वीडियो क्लिप हमें थोड़ा हेल्प करेगा इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में. For absorbing water from the soil, plants use their natural straws which are called roots. Roots are the underground parts of the plants and they absorb water by using root hair cells. Let's have an enlarged view of root hair cell. A root hair cell has a cell wall, cell membrane, vacuole, nucleus and a root hair like projection. There is a gate between the two plant cells, root cells, which are called plasmodesmata. When water enters the root hair cells by the process of osmosis, it moves from cell to cell into the inner parts of the roots and finally it reaches the xylem which carries this water up. Review. Let us revise the topic what we have learned in this lesson. इस लेसन में जो कुछ अभी तक हमने स्टडी किया वो हम रिवाइज कर लेते हैं और वो रिवीजन हमारे पास इस एक डायग्राम से कंप्लीट हो जाएगी. वी नो दैट वाटर इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल. वाटर सॉइल में प्रेजेंट होता है एंड रूट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल. दैट्स वाई रूट विल एब्सॉर्ब द वाटर फ्रॉम द soil particles. Our today's lesson is related to how plants take in water. So, water firstly enters into the root hairs from the surface of soil particles. सबसे पहले water molecules की entry होती है into the root hair cell and it is due to the process of osmosis because the water concentration in the soil particles is higher than the water concentration inside the root hair cells. That's why water molecules will move from the soil into the root hair cell. Secondly, when the root hair cell have more water than the cells next to it, then the water molecule will move from the root hair cell to the cells next to them on the inner side. Water molecules will move from cell to cell due to osmosis. यानी वही osmosis जो soil particles और root hair cell के दरमियान में था वही अब root hair cell और inner root cells के दरमियान भी वही osmosis का process होगा concentration के difference की वजह से. That's why water molecules will move from cell to cell on the inner side. Finally, the water molecule will reach the xylem of the roots. Water molecule roots की xylem tube के अंदर पहुंच जाता है and we know that xylem tubes carry water to all parts of the plant because the xylem transportation system is present in the roots, stems, branches, leaves, fruits. You can say all parts of the plants have a xylem supply. So the water which enters into the root hair cells, it passes to the next cells due to osmosis on the inner side of the root and finally reaches the xylem, and that xylem carries the water to all parts of the plant. Plants के सारे part को वही xylem water carry करती है. Dear students, here is an assignment for you. You have to answer the question which is question number 2a.
What is osmosis? Question number 2b. Explain how water enters root hair cells. And question c. Where does the water go? Dear students, hopefully you have understand the topic. But even then, if you find any difficulty while understanding this topic in this video lecture, you can ask your questions in General Science discussion group. I will answer your queries there. Well, it's all for today. Thank you and have a nice day.